Good evening, friends. Today we will be discussing on one of the latest change in the return filing process under GST. That is the QRMP scheme, quarterly return monthly payment scheme under GST. It is the first time that the government has looked upon a scenario in which instead of monthly filing of returns, there will be a quarterly filing of return. It was a much needed requirement that we should have a system or a mechanism in which the small taxpayers, small registered persons have to comply with the GST with the minimum compliance burden. So QRMP scheme is the first step towards that. So before starting that, I must say that QRMP is the first step towards the ease of doing business under GST. ये पहला स्टेप है जहां पे मुझे कैटेगोरिकली लगता है कि गवर्नमेंट हैव एक्चुअली थॉट कि हम लोगों को कुछ रिलैक्सेशन जीएसटी के अंदर देने हैं. द प्रोविजंस, द मैकेनिज्म इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड ओवर द पीरियड. It started with GSTR1, 2 and GSTR3. Then it went back to GSTR1 and GSTR3B. Then we were expecting a new return format in which we would had GSTR1, GSTR3B. Sorry, there was a message, so I was just rechecking. Originally it was GSTR1, 2 and 3. However, due to burden while filing GSTR2, there were many problems when we were filing GSTR2. So GSTR2 was rolled back and we were left with only GSTR1, and instead of 3, we had a form 3B. Then we were envisaging GSTR3 with ANX1 and ANX2. Then we also had a possibility of RET01, RET02 and RET03. Now everything has been scrapped. The GST Council has decided that we will be working only on GSTR1 and GSTR3B for the foreseeable future. यानी अभी जितना फोर्सी कर पा रहे हैं, the council has decided कि हम लोग 1 और 3B इन्हीं दो फॉर्म्स पे कंसंट्रेट करेंगे, इन्हीं को इंप्रूव करेंगे और अपनी रिटर्न्स को आगे प्रोसेस करेंगे. And how they will improve these forms? The only objective is to make them automated plus interlinked. 1 से अब 3B में डाटा कैप्चर होगा, ऑटोमेटिकली मेरी आउटवर्ड सप्लाईज आएंगी, एंड सिमिलरली देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल बी हैविंग आवर क्रेडिट्स बीइंग रिफ्लेक्टेड इन GSTR3B. Currently they will be routed through GSTR2A or GSTR2B. We will also discuss the validity and sanctity of GSTR2A and GSTR2B also. To begin with, I will be sharing my slide. Just give me a second. GSTR2B. When the form GSTR2B was introduced in September 2020, just 2 months back, it was not notified. जब 2B originally आया था, notify नहीं किया था. Now they have notified the form. They have notified in Rule 60, Sub Rule 7. 67 has Rule 60 is directly linked with Section 38 of the Act, जो GSTR2 और inward supplies की बात करता है. Now we all understand that the government has introduced GSTR2B so that we can verify our credits from that particular form and claim credits through GSTR2B. मतलब 2B को बेस लेके मैं अपनी रिटर्न्स के क्रेडिट को फाइनल करूं. बट सेक्शन 16 जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट्स की बात करता है, Section 17, which talks about apportionment of credit, again in relation to input tax credit. There is no provision in Section 16 or Section 17, or for that matter, any of the rules made under Section 16 or 17, wherein they have referred GSTR2B. So GSTR2B has not been referred neither in Section 16 to claim or apportion or to restrict the credits, neither in the rules in relation to that provision.
तो 2B को कहीं पे भी आईटीसी के सेक्शंस के अंदर लेके नहीं आया गया, उसको एक रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म सेक्शन 38 के अंदर जो रूल 60 है उसके अंदर इस रूल को इनकॉर्पोरेट किया है. And the objective of the rule is only to facilitate your credits, but not to restrict your credits. When we read section rule 60 subsection 7, it says कि आपको we will give you an automated freeze figures. 2A was a recurring, it was an automated form, a real time form. Every time GSTR1 was being submitted, 2A की फिगर्स चेंज होती थी. आज 2A में 100 है, कल 110 है, फिर उसमें से किसी सप्लायर ने माइनस कर दिया 105 है. So 2A was a very fluid form. So they thought that we need a form which the taxpayers can rely upon. कि सर हमने 2B के बेसिस पे लिया था, any plus minus in my 2A will not change. 2B was a freeze figure, उसको मैंने अपने रिकॉर्ड पे रखा, उससे अपना क्रेडिट ले लिया, मैटर क्लोज. Then I can justify the department. But in case you have credits appearing in your GSTR 2A, but the credits are not appearing in GSTR 2B, then what is to be done? As I already said, GSTR 2B is a stagnant form. वो GSTR 1 की जो ड्यू डेट है, फॉर एग्जांपल अप्रैल की ड्यू डेट है 11th of May, अभी क्वार्टर वाले के लिए वो 13th में हो जाएगा या 13th of the next quarter हो जाएगा. तो 11th May का मतलब है 12th May को जितने GSTR 1 फाइल हो रखे होंगे उसका ऑटो पॉपुलेटेड डाटा हम आप लोगों को दे देंगे. अब 12th को मैंने अपनी रिटर्न फाइल करी थी, आपको क्रेडिट पास ऑन किया. 13th को मिस्टर राम ने फाइल करी, आपके पास क्रेडिट आ गया. नाउ इन योर GSTR 2A यू हैव सरप्लस अमाउंट, बट 2B में क्रेडिट कम है. 2B में से इट इज 100, 2A के अंदर इट इज 120. देन व्हाट इज टू बी डन? देन द instruction of form GSTR 2B says that you can claim the higher amount. Rather, it does not use the term you can claim the higher amount. I am reading it verbatim, only the green portion. This is the extract from form GSTR 2B instruction. Taxpayers are advised to refer form GSTR 2B for availing credits in form GSTR 3B. So 2B is only an advisory form. It is only a facilitation form that can be used by you to avail the credit. So आप इसको basis लेके अपने credits को claim कर सकते हो. However, in case for additional details here mean additional credits, they may refer to their respective form GSTR 2A, which is updated on real-time basis for more details. So obviously, because they have not restricted my credits to 2B, अभी कोई प्रोविजन नहीं है जो 2B से लिंक करके मेरे क्रेडिट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. 36 के अंदर उन्होंने सब रूल 4 डाल के बोला 110% of 2A. So even today, the law which stands is 110% of 2A. I am not saying whether it is constitutionally correct or not. What I am trying to say is the restriction under the law is still linked with GSTR 2A and not with GSTR 2B. 2B is only a stagnant form. अगर आप अपनी 3B के लिए कोई stagnant figure चाहते हो तो then you may refer to GSTR 2B. But if you want कि मेरा 2B में credit कम आ रहा है, 2A में credit ज्यादा आ रहा है, then you can avail that additional credit. Obviously, you will have to create reconciliation. But GSTR 2B is not the mother form or not the form above which you cannot go. So I am leaving my GSTR 2B aspect only to this, only till this level, and now starting on with the objective or the agenda for today's discussion. That is the QRMP scheme, quarterly return and monthly payment scheme. Since it is a return mechanism, so we have to look into the 3 provisions of the GST Act and their rules thereunder. Section 37, which provides us the detail of furnishing of an outward supplies detail, जहां पे मेरे को outward supplies की detail file करनी होती है, that is my GSTR1. Then I have section 38, which provides me information in relation to inward supplies. So I have to submit GSTR2, which is not yet notified, but basis the other person's GSTR1, there are some data auto-populated for my inward supplies, so that can be referred to as GSTR2A and now GSTR2B. And lastly, the main return section, that is section 39, in which GSTR3B is also notified. So this QRMP scheme is applicable with effect from 1st of January 2021.
यानी जो जनवरी से हमारा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, जनवरी टू मार्च 2021, दैट इज द फर्स्ट रिटर्न पीरियड फॉर QRMP scheme. Now we will understand that in this slide we will be concentrating only on the overview or the aspects that we need to discuss during the course of our deliberation. So there will be a specific category of suppliers who have been allowed to come under the QRMP scheme. We will understand who are those suppliers. Those suppliers will have to file a monthly tax payment. They will have to pay the taxes that are payable by them through a simple challan. नॉर्मल एक जीएसटी का चलान पे करना है, कोई आउटपुट की डिटेल नहीं देनी, कोई इनपुट की डिटेल नहीं देनी. You just have to submit the amount into the government kitty through a GST challan, and that will be the closure of the compliance. Plus, you will have to file your quarterly returns, and returns both GSTR 3B and GSTR 1 will be filed quarterly. The due date for paying the taxes will be 25th of the next month. क्वार्टर के अंदर 3 महीने हैं, तो पहले 2 महीनों के लिए जो ड्यू डेट है, इट इज 25th, एंड बाकियों की इट इज लिंक्ड विद GSTR 3B, एंड द ड्यू डेट फॉर GSTR 1 will be 13th of the succeeding month of the end of the quarter. For January, February, March by 13th of April 2020. And for this quarter, Jan to March, my GSTR 3B, the due dates will be 22nd and 24th, depending upon the state in which we are registered. For example, for Delhi, Noida, that is UP, Haryana, that is the Delhi NCR region, the date is 24th. So, very simple. The tax have to be paid by 25th for the first and second month. In the third month, we will have to file our GSTR 1 by 13th, and we will have to submit our GSTR return, GSTR 3B return by 22nd and 24th. So basically, we have 3 aspects that we need to discuss upon. That is, who is the supplier who can opt under QRMP scheme? 2, what is the payment mechanism? Which form I have to use? Is there any option that I can avail while filing my tax payments? So, supplier कौन हो सकता है, मेरे को monthly tax payment कैसे करनी है, and what are the integrities of GSTR 3B, GSTR 1, especially linking it with GSTR 2B and GSTR 2A, that B2B invoices का credit अगर मैं pass on नहीं करूंगा, तो my recipient may not get the credit, or they might get a notice from the department that you have claimed credit, but there is no corresponding entry in GSTR 2A and GSTR 2B. So considering all these aspects, I have divided my presentation in 3 parts: supplier, tax payment, and return. Starting on with the supplier portion. So the first issue is, who is eligible for this scheme? So all registered persons whose aggregate turnover in the preceding financial year, that is, if I am talking about 2021, that is the current financial year, then my preceding financial year will be 2019-20. So turnover of 2019-20 should be up to 5 crore rupees. यानी 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, तो मैं QRMP स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूं. That is, I will be filing quarterly return and monthly tax payment I will be doing. Now, the important words over here are aggregate turnover. Again, it is pan-India turnover. It is pan-India turnover for all the GSTNs taken together. So for all the GSTNs taken together, the turnover limit is 5 crore rupees. Now I received a query from one of the professionals that under QRMP scheme, I have 2 registrations, say one in Delhi and one in Gujarat. My Delhi turnover is 10 crore rupees. My Gujarat turnover is 50,000 only. So I can opt for QRMP scheme for Gujarat registration. And when I asked him what is the basis for his conclusion, he said para 4.7 of circular number 143. 10th November को ये notifications आई थी जिसमें ये QRMP scheme notify हुई थी. उसी दिन एक circular issue हुआ तो to explain the QRMP scheme. And there was a circular, there was a paragraph over there, para 4.17,
which said that, I am reading it verbatim, it is further clarified that the option to avail the QRMP scheme is GSTN wise, and therefore distinct persons as defined in section 25 of the CGST Act have the option to avail the QRMP scheme for one or more GSTNs. In other words, some GSTNs for that plan can opt for QRMP and remaining GSTNs may not opt for that scheme. यानी ये कह रहा है कि एक ही टैक्स पेयर है, एक ही रजिस्टर, मतलब एक ही पैन है, उस पैन पे मल्टीपल जीएसटीएंस हैं, कुछ जीएसटीएंस क्यूआरएमपी ले सकते हैं और कुछ रजिस्ट्रेशन क्यूआरएमपी नहीं ले तो भी वो सफिशिएंट कंप्लायंस है. But to enter into QRMP scheme, there is a master condition, there is a condition under notification 84/2020 that the aggregate turnover should be less than 5 crore rupees. So even if that particular GSTN turnover is less than 5 CR, that does not mean that you can avail QRMP scheme. QRMP scheme का मतलब ये नहीं है कि GSTN wise turnover देखनी है. QRMP scheme का मतलब ये है, first you identify whether your aggregate turnover is more than 5 crore or less than 5 crore. If it is more than 5 crore rupees, then for any GSTN you cannot opt for QRMP. एक बारी 5 करोड़ से ऊपर चलेगी तो 10 के 10 GSTN मेरे QRMP से बाहर हो गए. But there can be a situation where my turnover is less than 5 crore rupees and I have 5 GSTNs. My turnover is less than 5 crore, but I have 5 GSTNs. Out of those 5 GSTNs, 4 GSTNs are only cross-charging their relevant head office, and head office is issuing the invoices to the final customer. तो उसने बोला कि जो हेड ऑफिस के लिए, उसके लिए वी आर ऑप्टिंग फॉर नॉर्मल स्कीम, हम मंथली करेंगे. एंड फॉर माय ब्रांचेस जो सिर्फ क्रॉस चार्ज कर रही हैं अपने हेड ऑफिस को, उसके लिए हम QRMP स्कीम कर लेंगे. That can be done. That is, if you are eligible for QRMP scheme, then you can decide which GSTN you will opt for QRMP and for which you will go for normal registration. So I will suggest wherever there are branches registered for cross-charge purposes, then in all these situations, you can devise a mechanism whereby all those branches will go under QRMP scheme and the main office or the head office will go under the normal scheme. Again, sir, the rider and the main condition has to be satisfied. The overall, the aggregate turnover should be less than 5 crore rupees. Otherwise, this scheme is not available to that particular taxpayer. Now, let us understand this entire concept with some illustration. So, for financial year 2019-20, my turnover was 3 crore rupees. My turnover for 2020-21 up to November, अभी ये जो month खत्म हो रहा है, up to November is assuming 3 crore rupees. So whether I am eligible for QRMP scheme, previous year less than 5 crore, yes, you are eligible. 2021 still 5 crore not achieved, so you are eligible for QRMP scheme. Another illustration, previous year 3 crore rupees, current year already up to November, my turnover has exceeded 5.5 CR, has exceeded 5 crore rupees. In this situation, whether I am eligible for QRMP scheme? No. So we have to first check the turnover of the preceding financial year. My preceding financial year, I am eligible. Then I have to check the turnover of the current year. And if my turnover exceeds 5 crore rupees, then I will not be eligible to come under the QRMP scheme. And this is the extract from notification from where I have inferred that even for 2021, if your turnover has exceeded 5 crore rupees, then you will not be eligible to come under this scheme. But supposingly, I have an illustration, so we will discuss at that particular time only. Third illustration, my turnover in 1920 is 6 crore rupees. My turnover up to November is 1 crore rupees. Am I eligible? No. Why? Because my preceding financial year turnover was more than 5 crore rupees. So the main condition is not satisfied. QRMP scheme is not applicable. However, assuming that final turnover for 2021 is only 2 crore rupees. For final turnover for 2021 is 2 crore rupees. Then for 2021-22, I can go for my QRMP scheme.
Another illustration, financial year 2019-20, my turnover is 3 crore rupees. I am eligible. Financial year 2021, up to November 1 CR, up to November 1 CR. मार्च तक मेरी 2 करोड़ की टर्नओवर होगी, तो टोटल टर्नओवर इज से 1 + 2 टोटल 3 करोड़ रुपीस. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 up to May 6 crore rupees. Up to May 6 crore rupees. Ignore this till March 2 crore rupees. This is a wrong figure. Up to May it is 6 crore rupees. तो 19-20 में 3 करोड़, 20-21 के अंदर 3 करोड़, 21-22 के दूसरे महीने में ही 6 करोड़ हो गया. अब क्या होगा? Whether QRMP scheme is available? Yes, QRMP scheme is available for 2021. 2021 का जो लास्ट क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च, उसके लिए मुझे मिल जाएगी, क्योंकि 19-20 में कम है और 2021 में भी कम है. 21-22 के अंदर भी फर्स्ट क्वार्टर में मुझे ये स्कीम मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर की खत्म होएगी, क्योंकि मैं अपनी 5 करोड़ की लिमिट को खत्म कर चुका हूं, तो फ्रॉम अप टू फर्स्ट क्वार्टर मेरे पास QRMP स्कीम रहेगा. फ्रॉम 1 जुलाई 2021 आई विल हैव टू come back to the normal scheme. So in simple words, agar during the year I achieve the limit of 5 crore rupees, if during a particular quarter I achieve the turnover of 5 crore rupees, then for that particular quarter you will remain under the QRMP scheme even though your turnover has exceeded 5 crore. अगर किसी क्वार्टर के बीच में 5 करोड़ क्रॉस करता है तो उस क्वार्टर के लिए आप QRMP ही रहेंगे, बट from the next quarter you will have to go back to the normal scheme, that is monthly GSTR1 and monthly GSTR3B. Opting for the scheme, because it is a new scheme, so you will have to opt for the mechanism whether you wish to avail this QRMP scheme or not. The government has said that they will automatically shift the taxpayer to this scheme based on their criteria. If your turnover is less than 1.5 CR and you are filing GSTR1 on quarterly basis, you will be shifted to QRMP. मेरी turnover 1.5 करोड़ से कम है, I am filing GSTR1 on quarterly basis, I will be shifted to QRMP scheme. My turnover is more than 1.5 CR but less than 5 crore. More than 1.5 but less than 5 crore, they will be shifted again to QRMP scheme. But if your turnover is less than 1.5 CR, if your turnover is less than 1.5 CR and you have opted for monthly GSTR1, then you will not be given an automatic option. So you will have to go and select that you want to file QRMP scheme. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं GSTR1 मंथली फाइल करता हूं और मेरी टर्नओवर 1.5 CR से कम है, then you will not be given an automatic option to go into this scheme. So just forget about all this automatic or non-automatic. I have to understand whether I want to go for QRMP scheme or not. अगर गवर्नमेंट ने मेरे को QRMP में ले गई है, very good. अगर गवर्नमेंट नहीं लेके गई है तो I will opt it myself. So for the fourth quarter, that is the first tax period of QRMP scheme, the government has said that you can opt this option from 5th of December to 31st January 2021. So जो फर्स्ट टैक्स पीरियड है, which is commencing from 1st January 2021 to March of 2021, you can opt for this scheme from 5th to 31st January 2021. And for periods from 1st of April 2021, पहले रिटर्न पीरियड की बात अलग कर दी, उस रिटर्न पीरियड के बाद कभी भी 2021, 22, 22, 23 और 27, 28 till the provisions are not changed, if I have to opt for this scheme, then what I have to do? What is the time period to opt for this scheme? So it says that, I am reading it verbatim, option has to be availed from the first day of the second month of the preceding quarter. तो पहले मुझे क्या डिसाइड करना है, मुझे किस मंथ के अंदर अपनी इस स्कीम के अंदर एंटर करना है, वो आइडेंटिफाई कर दिया से 1st of July 2021, 1 जुलाई 2021 से मैं QRMP स्कीम के अंदर आऊंगा. Then what it says is first day of the second month of the preceding quarter. So my quarter is July to September. Previous quarter will be April to June.
The second month will be 1st of May. So from 1st of May till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised. So it gets a bit complicated. So इसको सिंपल समझते हैं. फर्स्ट क्वार्टर 2021-22 के लिए मैं ये स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल. यानी पहले वो क्वार्टर आइडेंटिफाई किया, उस क्वार्टर से पहले चला गया, उसके सेकेंड मंथ से स्टार्ट करके जिस क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं उस मंथ के एंड तक, उसके फर्स्ट मंथ के एंड तक मैं कभी भी इस स्कीम के अंदर ऑप्ट कर सकता हूं. So for 2021-22 first quarter, April to June 2021, if I want to opt for QRMP scheme, then I have to avail the option from 1st of February to 30th of April. Similarly, अगर मुझे थर्ड क्वार्टर से जाना है तो थर्ड क्वार्टर का मतलब पहले मैं इसका प्रीवियस क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर पे आऊंगा, सेकेंड क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे पे. तो सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर. सेकेंड मंथ हो गया अगस्त. फर्स्ट अगस्त से थर्ड क्वार्टर का पहला मंथ मतलब मेरा सितंबर, तो मेरे को आ जाएगी अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर. सर अगेन सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि मेरे को 2 महीना पीछे जाना है, जिस दिन से मुझे चाहिए उसके 2 महीना पीछे और 1 महीना आगे तक मेरे पास टाइम है. अगर मैं टाइम लाइन पे खड़ा हो जाऊं तो जिस दिन से मुझे QRMP पे जाना है उससे 2 महीना पहले और 1 महीना बाद के अंदर मैं आई कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम. The only condition that they have attached is that when I am going for QRMP scheme, when I am opting for a QRMP scheme, then when I am standing on a particular date on which I am availing this option, all my returns should be filed. जिस दिन मैं इस स्कीम के अंदर एंटर करने जा रहा हूं उस दिन तक की जितनी रिटर्न्स ड्यू हो गई हैं वो सारी रिटर्न्स फाइल्ड होनी चाहिए. ओनली देन यू कैन कम अंडर QRMP स्कीम. इट इज ओनली अ प्रोसीजरल एस्पेक्ट कि आपकी पुरानी सारी रिटर्न्स कंप्लीट होनी चाहिए. तो फिर सप्लायर वेरी सिंपल, 5 करोड़ से कम की टर्नओवर होगी तो मैं QRMP स्कीम के अंदर आ सकता हूं. एनरोल करने के लिए जो फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट है स्टार्ट फ्रॉम 5th of December टू 31st of January. मैं ऑप्ट करके QRMP स्कीम में आ जाऊंगा. आने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मंथली टैक्स पेमेंट करनी है. मंथली पेमेंट की दे हैव गिवन अस 2 ऑप्शन, नॉर्मल मैकेनिज्म एंड फिक्स सम मेथड. कोई भी मैकेनिज्म हो चाहे नॉर्मल या फिक्स सम मेथड, the payment has to be done through PMT 06 challan. So the challan that has to be used for filing monthly tax payment is PMT 06. And under normal method, what I will do, total output tax less input tax credits, I will have the balancing figure tax payable और ये टैक्स को मैं पे कर दूंगा PMT 06 से. Fixed sum method is again a step towards ease of payment. वो ये कहता है कि आपके फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए हम फिक्स लायबिलिटी कर देते हैं. प्रीवियस क्वार्टर की रिटर्न उसमें जो कैश लेजर से पे किया है, प्रीवियस क्वार्टर की रिटर्न उसमें जो कैश लेजर से आपने अमाउंट पे किया है उसका 35% पहले महीने में, 35% दूसरे महीने में और थर्ड मंथ में आप बैलेंस पे कर देना. वी विल एज्यूम कि आपने पूरी कंप्लायंस कर दी है. नॉर्मल मेथड के अंदर कुछ नहीं है, मैं अपना आउटपुट कैलकुलेट करूंगा, इनपुट कैलकुलेट करूंगा, अपना नेट डिफरेंस जो है वो मैं पे कर दूंगा. फिक्स सम मेथड के अंदर क्या है, मैं प्रीवियस क्वार्टर देखूंगा. इलस्ट्रेशन से समझते हैं. प्रीवियस क्वार्टर को देखूंगा, एज्यूम करते हैं फर्स्ट क्वार्टर मेरा प्रीवियस क्वार्टर था, उसने 1000, 3000, 3000 मेरी ये टैक्स लायबिलिटीज थी. पूरे क्वार्टर की बात कर रहे हैं फ्रॉम 1st of April टू 30th of June 2021. माय लायबिलिटी अंडर आई वाज 1000, CGST SGST वाज 3000 ईच. तो वो कहते हैं जुलाई और अगस्त के लिए तो आप कुछ मत करिए, 35% ऑफ टोटल अमाउंट. 1000 का 35% 350. CGST के लिए 35% 1050. सिमिलरली SGST. तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. जो डिफरेंशियल है वो आप सितंबर में पे कर देना. वी विल डीम दैट यू हैव कंप्लीटली कंप्लाइड विद द प्रोविजंस. एक्स्ट्रा बनता है, कम बनता है, कोई इंटरेस्ट की हम आपसे बात नहीं करेंगे. इंटरेस्ट तभी लेंगे अगर आपने इस अमाउंट को 25 तक पे नहीं किया.
आपको जुलाई का पे करना है 25 अगस्त तक, अगस्त का पे करना है 25 सितंबर तक। अगर आपने 25 अगस्त और 25 सितंबर तक एडॉक 35% की अमाउंट पे कर दी है, तब आपको अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 28 को पे करते हो तो 3 दिन का इंटरेस्ट, या जितना डिले करोगे उतना इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑल्सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर फिक्स सम मेथड। Assuming I have sufficient credits in my cash ledger, or there are sufficient credits in my credit ledger. अब मेरी यहाँ पे पिछले महीने तो मेरा 1000 रुपीज का बन रहा था, लेकिन इस बारी तो मुझे पता है कि मेरे क्रेडिट लेजर के अंदर सफिशिएंट क्रेडिट आ रहा है या सफिशिएंट कैश क्रेडिट आ रहा है, मेरा टीसीएस डिडक्ट हो रखा है, मेरा टीडीएस डिडक्ट हो रखा है। इन दैट सिनेरियो द रूल सेज कि तब आपको पे करने की नीड नहीं है, ना ही फर्स्ट मंथ के लिए पे करना है, ना ही सेकंड मंथ के लिए पे करना है। इफ द अमाउंट्स इन योर कैश लेजर और क्रेडिट लेजर आर एडिक्वेट इनफ फॉर दीज लायबिलिटी, प्लस अगर बाद में पता चला कि जुलाई की लायबिलिटी 350 नहीं, ये तो 500 थी, मेरी अगस्त की लायबिलिटी 350 नहीं, ये 400 थी, दोनों महीने में मेरी लायबिलिटी ज्यादा थी, पेमेंट कम है, इवन देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट। अगेन सर, इट इज नॉट रिटन इन सेक्शन 50, इट इज रिटन इन para 8 of your circular, and that is because they have given you a fixed option method. They have given you a mechanism that you opt for a 35% mechanism. Since it is part of the law, they cannot charge interest. तो वो इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि दे हैव गिवन अ मैकेनिज्म कि आप फिक्स 35 बैलेंस पे कर देना, वी विल एक्सेप्ट इट एज अ प्रॉपर टैक्स पेमेंट। सो आई एम कंक्लूडिंग, मेरे पास मंथली पेमेंट करने के दो ऑप्शंस हैं, एक नॉर्मल मैकेनिज्म, एक फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में मैं 35 और बैलेंस पे करूंगा। फिक्स सम मेथड के साथ दे हैव आल्सो अटैच्ड अ कंडीशन दैट द टैक्स पेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर द एंटायर क्वार्टर, यानी प्रीवियस क्वार्टर में पूरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक। यू शुड नॉट हैव रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। फॉर एग्जांपल ऑन 15th of April, अगर मैं अप्रैल से जून मेरा प्रीवियस क्वार्टर है, सो माय रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड फ्रॉम 1st of April. If I have obtained registration from 10th of April or 15th of May or 20th of June, then this method will not be applicable for the first period, that the succeeding period. हाँ, जब आप पूरे क्वार्टर के लिए रजिस्टर्ड हो, उसके बाद यू कैन गो फॉर फिक्स सम मेथड। लास्ट इज रिटर्न्स, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। क्यों? क्योंकि कोई रिटर्न नहीं तो आ ही नहीं रही है। जीएसटी या 3B पहले भी फाइल करते थे, अभी भी फाइल करना है, पहले मंथली फाइल करते थे, अब क्वार्टरली फाइल करना है। ड्यू डेट्स 22 एंड 24, कोई चेंज नहीं है। तो फर्स्ट क्वार्टर 2021-22 की ड्यू डेट क्या होगी? 22 या 24, कोई चेंज 3B में नहीं है। GSTR 1 में फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसकी ड्यू डेट जो पहले एंड ऑफ द क्वार्टर थी उसको प्रीपोन करके 13th कर दिया है। तो फर्स्ट क्वार्टर 2021 की ड्यू डेट होगी 13 जुलाई। इसके अलावा रिटर्न्स में कोई नया चेंज नहीं है। बट क्योंकि अब अगर मैं GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करूंगा तो मेरे कुछ सप्लायर्स, मेरे कुछ रेसिपिएंट्स, दोज हु वांट टू अवेल क्रेडिट ऑफ माय इनवॉइसेस, उनके पास क्रेडिट पास ऑन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अ स्कीम रेफर टू एज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सो a QRMP registered person or a registered person who has opted for QRMP scheme, he can use this facility, invoice furnishing facility. Invoice furnishing facility is a mechanism in which I can furnish my B2B invoices on a monthly basis. तो मेरे क्वार्टर की ड्यू डेट अप्रैल में, जून की ड्यू डेट तो है 30th of July, लेकिन मैं अप्रैल का डाटा अप्रैल के बाद ही फाइल कर सकता हूं, यानी अप टू अ स्पेसिफाइड डेट इन मई सेल्फ, फ्रॉम 1st to 13th। ऐसे ही मई का डाटा मैं 1st to 13th of जून के अंदर फाइल कर सकता हूं, सो दैट द अमाउंट्स, द क्रेडिट्स कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द काउंटर पार्टी GSTR 2A and 2B. So I have an option to upload. Again, it is an option, not a mandate to file IFF. 2, आप IFF से मैक्सिमम 50 लाख रुपीस पर मंथ का क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो। सो इवन इफ योर अमाउंट इज मोर देन 50 lakh rupees, the maximum amount that can be feeded through IFF is only 50 lakh rupees. Thirdly,
एक बार ही आपने एक इनवॉइस को आईएफएफ में डाल दिया तो वो आपको दोबारा जीएसटीआर 1 में नहीं डालना. प्लस यू कैन partially submit data in IFF. For example, in a particular month, I have 300 invoices, and out of those 300 invoices, only 10 invoices I need to report. So I can report only those 10 invoices in my IFF for that particular month, and the balance 290 invoices I can report in GSTR1. I don't have to resubmit those 10 invoices which have already been submitted in IFF. And lastly, IFF के अंदर I can save the invoices real time. मैंने अभी B2B इनवॉइस किया, मैं उसको हाथ के हाथ सेव कर दूंगा. मैंने कल इशू किया, उसको भी मैं IFF पोर्टल पे साइमल्टेनियसली सेव कर सकता हूं. However, the upload facility, the final submission facility of IFF will commence from the end of the month. It will commence from the end of the month and will range up to 13th of that month. तो in simple word, अप्रैल का IFF का डाटा मैं सेव कर सकता हूं 1 अप्रैल से लेके 13th मई तक, लेकिन उसको सबमिट करने की डेट है अप्रैल खत्म होने के बाद मई से लेके 13th मई तक. इट इज इन लाइन विद जीएसटीआर1. जीएसटीआर1 में भी मैं रियल टाइम सेव कर सकता हूं और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है मैं सबमिट कर सकता हूं. सिमिलरली इन आईएफएफ you can save your data real time and submit it after the completion of the month and latest by the 13th of the succeeding month. So the supplier is 5 crore rupees, registered person having turnover up to 5 crore rupees. Then you have to you have to pay monthly tax payments. Monthly tax payment, you have two mechanisms, normal or fixed sum method, 35 balance. GSTR returns, no major change. 3B, 1 new concept introduced, IFF. IFF के अंदर मैं B2B invoices upload कर दूंगा so that my recipients get the credit. If I evaluate this overall scheme, there are two major beneficiaries. बेनिफिट तो बहुतों को मिलेगा, लेकिन जो दो जनों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा उसमें से एक कैटेगरी है एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है. Since I am exporting my goods, I am exporting my services, I don't have any B2B supplies, so I don't have to file IFF. मेरा तो IFF भी खत्म हो गया. And generally, an exporter also does not have any tax liability. Generally, they may have a RCM liability once in a month or after say 3 months or 4 months. So ना ही मंथली टैक्स पेमेंट की सिरदर्दी, ना ही मंथली GSTR1 फाइल करने की सिरदर्दी, क्योंकि B2B है ही नहीं, क्वार्टर पे करेंगे, मैटर क्लोज हो जाएगा. सो एक एक्सपोर्टर्स को इसमें बहुत बेनिफिट हो सकता है. सेकेंडली, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी रिटेल स्टोर जो होता है, जो सिर्फ B2C में डील करता है, उसको IFF की नीड ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी कंज्यूमर क्रेडिट अवेल नहीं कर रहा. It is only a B2C customer which is coming to him. It is an end customer who does not want to take credit or who is not eligible to take the credit. So no IFF, monthly tax payment, quarterly GSTR1 and 3 matter close. So this is the first step towards the ease of business under GST. I think the government should also understand that linking my credits with GSTR 2B and 2A is only creating a mess. I understand the government is very particular about the frauds under GST, the bogus invoices, credits that are being taken. But they should also understand, whenever a bogus invoice is being discussed, they does not have mismatch in GSTR 2A. उनके कभी mismatch ही नहीं होते. जो bogus purchases होती हैं, they are first matched and only after that the transactions are closed. So you have to understand, then when there is a mismatch, these are genuine parties who are actually dealing in the process, and due to some clerical error or due to some practical reasons, the credit could not be reflected. So they must divide that fraud is not because of mismatch. Fraud is because of XYZ reason. Just because you are bringing in too much reconciliation mechanism, कि 2A से भी check कर लो, 2B से भी check कर लो, you are not able, you cannot control frauds with this. E-invoice is a mechanism through which you can control them. But GSTR 3B or GSTR 2B and 2A is not a mechanism to control the fraud. So you have to understand that you are increasing the burden of reconciliation on the taxpayer when you introduce form 2A and then you introduce a form 2B कि सर थोड़े टाइम के आप एडवाइजरी है, यूज करना है तो करो वरना मत करो. Either create a law that you have to use only 2B. Whether it is valid or not valid, constitutional, unconstitutional, within the powers of the act or not is a separate consideration. But bring a provision which is solid. And now you have brought 2B. अब 2B की validity क्या है? If a client asks me, sir, what should I do of 2B?
What will I say? Sir, it is an advisory form. If you wish to, you can. If you do not wish to, you can take credit on the basis of 2A. So again, the government should understand that this is creating complication. QRMP scheme is a very good scheme and a welcome step. And with this, the overview of the scheme is complete. Now, if we have any queries, I will be taking those. So in case you have any queries, we can discuss those. I am checking the chat box for queries. Just give me a second. The query is that whether aggregate turnover will include inter-branch stock transfers or not. Sir, yes. When we talk about aggregate turnover, it includes everything, whether it is a branch transfer. In simple words, I should say that GSTR1 or GSTR3B, the amount that are to be reported in 1 and 3B, totality of those amounts for all the GSTNs. So जो भी एक पर्टिकुलर GSTN में 3B या 1 में मुझे अमाउंट रिपोर्ट करनी है, उसका टोटल फिगर जो है सारे GSTNs का हमें लेना है, and that will be my limit to check whether I am eligible for QRMP scheme or not. Yes, because of branch transfer, many taxpayers may get out of the scheme, may not be able to get into the scheme. So I am waiting for another 1 minute. If we have any queries, we can discuss that, or any other query in relation to GST, I will take that also. So there is another query which says that when we are filing GSTR1, what will be the limits, whether it will be 1.5 crore or 5 crore. Sir, from 1st of January 2020-21, the limit will be 5 crore, more than 5 crore and less than 5 crore. The concept of 1.5 crore is now going with effect from 1st of January. जो confusion अभी थोड़ा time created रही है, वो खत्म हो जाएगी. From 1st January, either it is more than 5 crore, monthly GSTR3B, monthly GSTR1, less than 5 crore rupees, or less than 5 crore, quarterly GSTR3B, quarterly GSTR1. Since there are no other further queries, I will thank everyone for their patience hearing. Thank you.